She sings very nice. No, she has to do that. Achha, you have to do The that. key is inside, no. No. She also very sweet. You can sing and Sing do and aarti. do? Yeah. Okay. Good. Right. She can sing and do aarti. Yeah, that's what we'll do. Nindaya Tulsidevaya Priyaya Keshavascha Krishnavati Tadadevi Satyavantai Nindaya Tulsidevaya Priyaya Keshavascha Krishnavati Tadadevi Satyavantai Namo Namah. Nindaya Tulsidevaya Priyaya Keshavascha Krishnavati Tadadevi Satyavantai Namo Namah. Nindaya Tulsidevaya Priyaya Keshavascha
शिक्षा खत्म की जाए तो दर्शन Second, to consider the names of demigods like Lord Shiva or the Brahmas to be equal to or independent of the names of the Lord Vishnu. Third, to disobey the orders of the spiritual masters. Fourth, to blaspheme Vedic literature, holy texts, verses of the Vedic person. Fifth, to consider the glories of chanting Hare Krishna to be an imagination. Sixth, to give some interpretations to the holy names of the Lord. Seventh, to commit sinful activities on the strength of the holy name. Eighth, to consider the chanting of Hare Krishna as one of the auspicious ritualistic activities offered in the Vedas to the activities of God. 9, to instruct a faithless person about the glories of the holy name. And 10, to not have complete faith in the chanting of the holy name and to maintain for even after understanding some descriptions on this matter. It is also an offense to be inattentive while chanting. Every devotee who claims to be a Vaishnava must carefully guard against all these offenses in order to quickly achieve the desired success. Krishna Prema. Let us offer our humble obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord. For just like desire is motion of mercy or an option of compassion for God and souls.
Hare Krishna. Now we can all do control of them. And we can move on. एक्चुअली ये वाली रखी थी शायद प्रभु के लिए ना, फोल्ड कर देना, ये लोग तो आगे आ सकते हैं ना, इसको फोल्ड कर दे, प्रभु को दे दे, अपने बाहर ये वाला अच्छा नहीं, ये वाला मैट है, इसको फोल्ड कर दे, मैट है, नीचे मैट। उसके ऊपर हम चादर डालेंगे ना। हाँ, प्रभु इधर बनाएंगे। सिटिंग तो सॉफ्ट है ना शिवे, तो प्रभु आपके लिए इधर ज्यादा बेटर हो गया। बाहर आने के लिए पीछे आप वैसे भी नहीं देख रहे।
Vrindavan Prabhu. Kirtan. Jai Shri Jaya Shri
Koroti vachalam pangum nagaritam ittupadam avanti shivurum dhinataranam paramanandam anashi chaitanya samataji. Before I forget, Prabhupada, the deity Prabhupada, he should come to that level. That's one. Then another thing is, you are keeping Panchakutra as well as medicine at the same level. Gustu has come. This is extra. Gustu one he has come. Whose it is? So, Otherwise, it's okay, that's only thing that because in any case he may not go up, right? So raise his level to that. Okay, because he is down. Right? You got it? No? Yeah, it used to be like that, only like how you're asking, but it's just that guest deities are from that side. Okay, that's okay. But I'm talking so far. Now also just He should raise. okay. Give some support down. Sure. Keep it to the center. अच्छा वो जगन्नाथ इनका है दामोदर का है जी, जी. Canto 10, chapter 11. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. Betty, come here. Read that summary. Sit. I forgot your name again. What is your name? Is it Pranavi? Okay. Read that summary. Louder. Yeah, this chapter. Read the chapter name. Okay. Chapter 11. This chapter describes how the childhood pastimes of Krishna. This chapter describes how the inhabitants of Gokul left Gokul and went to Vrindavan, and how Krishna killed Vatsasura and Bakasura. When the Yamala Arjuna trees fell, they made a tremendous sound, like that of falling thunderbolts. Being surprised, Krishna's father, Nanda, and other elderly inhabitants of Gokula went to the spot where they saw the fallen trees and Krishna standing between them. Bound to the Ulukala, the wooden mortar. They could find no cause for the trees having fallen and Krishna's being there. They thought this might be the work of some other asura who had met Krishna on this spot. And they inquired from the playmates of Krishna about how the whole incident had taken place.
The children properly described how everything had happened, but the elderly persons could not believe the story. Some of them, however, thought that it might be true, since they had already seen many wonderful incidents in connection with Krishna. Anyway, Nanda Maharaj immediately released Krishna from the ropes. In this way, Krishna at every day and every moment displayed wonderful incidents to increase the parental affection of Nanda Maharaj and Yashoda, who thus felt both surprise and joy. The breaking of the Yamala Arjunas was one of these wonderful pastimes. Give it to her. Let her continue. One day, a fruit vendor approached Nanda Maharaja's house, and Krishna gathered some fruit grains with his little palms and went to the vendor to exchange the grains for fruit. On the way, almost all the grains fell from his palms. Only one or two grains remaining. But the fruit vendor, out of full affection, accepted these grains in exchange for as much fruit as Krishna could take. As soon as she did this, her basket became filled with gold and jewels. Thereafter, all the elderly Gopas decided to leave Gokula because they saw that in Gokula there was always some disturbance. They decided to go to Vrindavan. Braja, Dhama, and the next day all departed. In Vrindavan, both Krishna and Balrama, after finishing their childhood pastimes, began to take charge of calves and send them to the pasturing grounds. During this time, a demon named Sasura entered among the calves and was killed, and another Asura in the shape of big duck was also killed. The playtimes of Krishna narrated all these stories to their mothers. The mothers could not believe their children. Krishna's playmates, but because of full affection, they enjoyed these narrations of Krishna's activities. Hare Krishna. Thank you, Tolu. Shishukho uvacha gopanandadyaha shrutva durmayoho patato ravam tatra jagmuhu kuru shreshta nirghata bhaya shankitaha. Mataji, word synonyms, translation, purport, all the things. Shri Shuka Vacha, Shri Shukdev Goswami said, Gopa, all the cowherd men, Nanda Adya, headed by Nanda Maharaj, Shrutva, hearing, Dhrumayohu, of the two trees, Patano, falling down, Ravam, the high sound as terrible as thunderbolt. Tatra, there on the spot, Aja Moho, when Kurukshetra, O Maharaj Parikshit. Nirghata by Shankita. Who were afraid of falling thunderbolts. Translation. Shukdev Goswami continued, O Maharaj Parikshit, when the Yamala Arjuna tree fell, all the cowherd men in the neighborhood, hearing the fierce sound and fearing thunderbolts, went to the spot. Hare Krishna. So हम लोग पिछला अध्याय में पूर्ति किया है श्री दामोदर का लीला, 2 भाग पूर्ति हो गया. यहाँ हमको देख सकते हैं जैसी वो दोनों वृक्ष गिरा इतना आवाज आया. So everybody was completely concerned and they were all rushing to Nanda Baba's palace. What happened? Lala is laughing as usual, smiling. Nothing happened to him. So they were all very happy because every moment their thought is only in Krishna, nothing else. The entire Gokul Lavasi. So now, after looking at it, they were comfortable that Lord is not hurt or anyway. So in this Leela, in this chapter also, we can understand there are 2 more things which is happening. One, a beautiful fruit seller. She comes and she was selling it. And Lord comes and he wanted to shower mercy. This is what we have to understand. In the Leela, there are so many other people coming into that, but only a few are getting direct blessing of the Lord. So यहाँ वो जो फल बेचती थी उनको बुला के उन्होंने क्या किया, उससे खरीदा. खरीद के in turn he has to pay something the price, right? तो उन्होंने घर से क्या लाया, उसी समय पे ये ऐसी dirhams वगैरह नहीं है. So she brought it because there is called a barter trade. Okay, so in the barter trade he brought lots of grains. क्योंकि बालक का
पैर सॉरी कमल हाथ तो इतना छोटा है, हाँ? इतना आया पूरा गिर पड़ा है, बाद में उधर पहुंचते पहुंचते थोड़ा सी बचा है। That much itself, the complete basket was filled with so much of gems, jewels, and whatnot. That means the Lord gives it; it is unlimited. And whatever we heard about him, his leela, his pastimes, his avatar, everything is unlimited. Similarly, when the Lord gives also, we say, "Na chappat pad ke diya." Right? Only thing we must have the hands or to take it rightly. Again, when we take it rightly, another important thing, how to use it. That's another next level. क्योंकि जैसे भगवान दिया है सब कुछ उनके है, हमारे पास पहुंच गया तो हमको क्या करना, उसको संभाल के हैंडल। इसका मतलब हमारा जो भी पगार है, whatever the salary, whatever we get it in our life, one should utilize it in the service of Krishna. This is a very important aspect. So this lady was flooded with so much of jewels and gems. Okay, so moving on to next shloka. Bhumyam nipattutu tatra dadrushuhu yamalarjunau bhapramush tad avijñāya lakshyam patanta karanam. Okay. Mataji, Danika Mataji. Bhumyam, on the ground. Nipatitau, which had fallen. Tatra, there. Dadrushuhu. Dadrushuhu. All of them saw Yamala Arjuno, the twin Arjuna trees. Babramuhu. They became bewildered. That. Avijnana, but they could not trace out. Lakshya, although they could directly perceive that the trees had fallen. Patana Karanam. Patan karan. मतलब cause of falling down. The cause of their falling. How could it have happened all of a sudden? Yeah, louder. There they saw the fallen Yamala Arjuna trees on the ground, but there they were bewildered because even though they could directly perceive that the trees had fallen, they could not trace out the cause of their having done so. Purport by Srila Prabhupada. Considering all the circumstances, had this been done by Krishna, he was standing on the spot and his playmates described that this had been done by him. Had Krishna actually done this, or were these merely stories? This was a cause of bewilderment. Brahmaha, Brahmaha. Brahmaha means bewildered. So Brahma means they were into complete bewilderment. See, when the Lord does things, it's always either astonishing or something bewildering. Why? Because whatever he does it is not in our perception. हमको इसको अनुमान नहीं कर सकते. अभी इसलिए वो लोग क्या कह रहे हैं, ओ इन्होंने गिराया होगा, ये कैसे संभव है, और क्या सोच रही है, ये अपने आप गिरने का भी चांस ही नहीं है, फिर कैसे संभव है. इसका मतलब भगवान का विषय में समझना इतना आसान नहीं है. कभी ये संभव होता है, बताओ. तभी कृपा होती है. कृपा कैसी होती है, कृपा कैसी होती है, हाँ, जोर से, गुरु के द्वारा कृपा होती है. इसलिए हम लोग क्या होता है, भगवान को समझने के लिए हर वक्त गुरु से प्रार्थना करो, गुरु को प्रसन्न करो, फिर भगवान को समझना संभव है. So why? Because the Lord is very very dear to his dear devotees. इसलिए हम क्या करना पड़ता है, वो गुरु को अच्छी तरह से सेवा करेगा तो भगवान को समझना आसान होता है. So again, if you look at it, every leela in this complete Bala Leela, Balakanda, completely astonishing. Every time आश्चर्यचकित देखना पड़ता है. हर लीला तो अद्भुत होता है. They heard have never imagined this as a. हमारा रोज का भी ऐसी होता है बहुत विषय. हम लोग बहुत कुछ प्रयत्न करेगा, सफलता होएगा करके नहीं होगा. अगर कुछ कार्य करेगा, हमको सोच भी नहीं होगा, अपने आप सफलता हो जाता है. So that means when the Lord wishes, it happens. Again, and the Lord wishes for our good or bad. That you have to understand. क्योंकि हमारा कल्याण के लिए हमेशा उन्होंने सोचने वाला है. So और दूसरा कोई भी नहीं होगा ये दुनिया में. So one should understand the real
well-wisher is only the Lord Supreme, no one else. That's why if you look at many of the places, all the devotees, they say Suhurt, Suhurt, Suhurt. The only Suhurt. One should understand. So moving on to shloka number 3. Ulukkalam vikarshantam dhamna bhaddham cha bhalakam kasyedam kuta ascharyam utpahata iti kataraha damodara. हिंदी दे दो प्रभु थोड़ा, पूरा इंग्लिश दे दो। हिंदी नहीं आज। हिंदी हाँ दामोदर। उलूकलम ओखली को विकर्षंतम खींचते हुए, दामना रस्सी से, बद्धम च तथा उधर से बंधी, बालकम कृष्ण को, कस्य इसका, इदम यह, कुतः कहाँ से, आश्चर्यम ये अद्भुत घटनाएं, उत्पादः उपद्रव, इति इस प्रकार, कातराह अत्यधिक क्षुब्ध। कृष्ण रस्सी द्वारा ओखली से बंधे थे जिसे वे खींच रहे थे, किंतु उन्होंने वृक्षों को किस तरह गिरा लिया। वास्तव में किसने यह किया, इस घटना का स्रोत कहाँ है। इन आश्चर्यजनक बातों को सोच सोचकर सारे ग्वाले सशंकित तथा मोहग्रस्त थे। अच्छा माता जी तात्पर्य पढ़िए माँ अर्धांगिनी। हाँ क्यों हिंदी नहीं आती है। हाँ कैसे शुरू करना है। तात्पर्य शिल प्रभुपाद की। हाँ चश्मा चश्मा। सारे ग्वाले अत्यंत शुभ थे क्योंकि बालक कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच खड़ा था और यदि संयोगवश ये वृक्ष उस पर गिर जाते तो वह चटनी हो जाता। किंतु वह जैसे का तैसा खड़ा था और फिर भी घटना घट गई। तो फिर यह सब किसने किया। ये सारी घटनाएं इस आश्चर्य में ढंग से कैसे घटी। उनके शुभ तथा मोहित होने का कारण यही शंकाएं थी, किंतु उन्होंने सोचा कि देव वश कृष्ण सुरक्षित है, अतः उसे कुछ भी नहीं हुआ। देखिए भगवान का लीला सुनने से हृदय को इतना हित होता है, कभी भी ऐसे नहीं होगा। हाँ क्या कारण है, हम लोग किसके द्वारा सुन रहे हैं। भगवान श्रील प्रभुपाद के भगवान का अति प्रिय भक्त। देखिए उन्होंने तात्पर्य में हर रस रखा है। कभी कभी थोड़ा डांट है, कभी प्यार से, यहाँ तो हंसी का। हाँ ये अभी देखिए भगवान का शुद्ध भक्त का संबंध से हमको भगवान को प्राप्त कर सकते बोला था। यही है भगवान के पास जितना भी रस है उतना रस उनका शुद्ध भक्त के साथ है। कभी डांटेगा तो भी हमको सुनना पड़ता। क्या कारण है, हमको ठीक करने के लिए, हमारा कल्याण के लिए। सो कोई सवाल पूछेगा, ओह महर्षि है वो इतना कैसे गुस्सा कर सकते। अगर गुस्सा नहीं करेगा तो कभी हम सुधरेगा होता नहीं होता। सो दिस आर द वंडरफुल थिंग्स वी हैव सी। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद हमेशा कैसे लिखते हैं, जो भी लीला होता है लीला के अंदर जो अपना हर एक का ब्रजवासी को नहीं तो दूसरा कोई द्वारकावासी होगा सिचुएशन के अनुसार उनका शूज पहन के वो जो सोच रहे उनका मनोभाव क्या है वो लग जाता है। हमको पढ़ेगा तो आता ही नहीं होगा। क्या कारण है, वी आर नॉट गो डीप इनटू दैट। क्योंकि लीला में पूरी तरह से अनुभव करने के लिए शुद्ध भक्ति होता है, मगर वो अनुभव को हम लोग शेयर करने के लिए ऐसे मौका मिलता है, सब मिलकर पढ़ते हैं। अभी अकेला में पढ़ेगा तो क्या फायदा होगा, कुछ भी नहीं। कल भी हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज सीधा बता दिया, अकेले पढ़ेगा तो भागवत का रुचि प्राप्त नहीं होगा। इसलिए शुरुआत से देखो कहाँ से, जैसे भगवान सनत कुमार को समझाया, राइट, ये भाग ऐसी परंपरा से आते हैं। हर जगह पे देखो अकेला कोई भी नहीं है, सब मिलकर ऐसी यहाँ भी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित, उसके साथ अनेक ऋषि वर्ते। सबसे बड़ा कौन है, सूत गोस्वामी। फिर आगे देखे तो वही सूत गोस्वामी सारी सौनकादि आगे क्या लिखता, आदि आदि बोलेगा तो अनेक है उसके अंदर। सो सौनकादि ऋषियों को भी उन्होंने सिखाया। सो दिस इज द वे वन हैज टू रिलीज द भागवत, नेवर एवर सिंगल। See, I'll tell you, in Sri Vaishnava Sampradaya, they always say that Goshti. Any devotional service you do it as a Goshti. Goshti means along with all the devotees. So then only you will relish it. The idea behind it, what is it? Tell me. Two reasons are there. Okay, then.
Huh? Okay, then what are the reasons? Complete involvement. Huh? Completely Involved. Okay, then. Satisfying all the senses. Huh? Churning happens. Churning. Okay. Huh? Same mood. Then. All senses are. Huh? All senses are engaged. Okay, then. You have said everything. Some basics are there. You have to say. Huh? Discuss and share. That's what he said earlier. You absorb more. That's also said. Okay. Say something very basic because you are in a higher level. I am thinking of a lower level. Cooperation. Right or not? Right? बिना cooperation होता है क्या? आपको सहायता करने सब लोग आ गए, हम लोग आया मिलकर. Right? That's one point. Another important thing is one will be able to understand everyone is equal here. Yes. Right or not? Samadarshinaha, samabhavana कैसे होता है? This is the reason the Goshti is important. So always any devotional service do it, always do it. Like the Sankirtan team, Nama Japa also, if you do it in a group, it works out. So here also we can understand the Goshti. Okay. Bala uchuhu anenethi tiryag gatam ulukalam vikarshata madhit gena purusha api achakshamahi. Okay. ये पढ़ने के लिए ऋषभ अम्मा. बालाहा सारे बालकों ने उचुहु कहा अनेक उसके कृष्ण द्वारा इति इस प्रकार तिर्यक टेढ़ी गतम हुई उलूखलम ओखली विकर्षता कृष्ण sorry. कृष्ण द्वारा खींचे जाने से मध्य गेंद दोनों वृक्षों के बीच जाकर पुरुष और दो सुंदर व्यक्ति अपनी भी अचक्षमही हमने अपनी आंखों से देखा है. अनुवाद. तब सारे ग्वाल बालों ने कहा इसे तो कृष्ण ने ही किया है. जब यह दो वृक्षों के बीच में था तो ओखली तिरछी हो गई. कृष्ण ने ओखली को खींचा तो दोनों वृक्ष गिर गए. इसके बाद इन वृक्षों से दो सुंदर व्यक्ति निकल आए. हमने इसे अपनी आंखों से देखा है. तात्पर्य वैश्य प्रभुपाद. जय श्री प्रभुपाद. कृष्ण के साथी कृष्ण के पिता को यह कहकर पूरी स्थिति बताना चाह रहे थे कि न केवल वृक्ष ही टूट कर गिरे अपितु इन टूटे वृक्षों से दो सुंदर व्यक्ति निकल आए. उन्होंने बतलाया ये सारी बातें घटी है और इन्हें हमने आंखों से देखा है. लीला को असली अनुभव कर लेके गाना होता है हमारा हृदय शुद्धि. राइट. क्योंकि नंद बाबा का बारे में बोलेगा तो नंद बाबा को पहले से मालूम होगा क्योंकि वसुदेव ने आके बता दिया आपका पुत्र साधारण नहीं है, ये बहुत कुछ अद्भुत कार्य करने वाला है. आप लोग आश्चर्यचकित आंखों को ऐसे खोल के देखना पड़ेगा. राइट. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. न तेतत् उत्तम जगृहु न घटेत्येति तस्य तत् बालस्यो उत्पाटनं तर्वोः केचित् संदिग्ध चेतसः. ओके. शैलेश प्रभु शब्दार्थ अनुवाद. ना नहीं ते सारे को तत् उत्तम बालकों द्वारा कहे गए स्वीकार करेंगे. ना घटे ऐसा नहीं हो सकता. इस प्रकार तस्य कृष्ण का तत्काम बालस्य कृष्ण जैसे बालक का उत्पाटनम जड़ समेत उखाड़ना सर्वो दोनों वृक्षों का केचित किसी ने संदिग्ध चेतस क्या किया जा सकता है इस विषय में संसद क्योंकि गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक नारायण के समान होगा. तीव्र प्रकृत स्नेह के कारण नंद इत्यादि ग्वालों को विश्वास ही नहीं हुआ कि कृष्ण ने इतने आश्चर्यमय ढंग से वृक्षों को उखाड़ा है. अतएव उन्हें बच्चों के कहने पर विश्वास नहीं हुआ. किंतु उनमें से कुछ को संदेह था. वे सोच रहे थे क्योंकि कृष्ण के लिए भविष्यवाणी की गई थी कि वे नारायण के तुल्य है, अतएव हो सकता है कि उसी ने ये किया हो. तात्पर्य एक विचार ये था कि वृक्षों को गिराने जैसा कार्य छोटे बालक के लिए असंभव था, किंतु
मुझे को संदेह था कि कृष्ण को नारायण के तुल्य बतलाया जा चुका है, अतएव वाले दुविधा में थे। हरे कृष्णा। मतलब देखिए हर लीला में बीच बीच में इनको योगम आया। पहला समय उन्होंने क्या सोच रहे थे, आश्चर्यचकित देखती थी और भी अद्भुत, हर एक तो अद्भुत है। फिर उसको क्या होता है, भगवान थोड़ा समय उसको पर्दा को निकाल देते हैं, फिर तुरंत याद आता है जैसी वसुदेव ने बताया और गर्ग मुनि ने क्या बताया, ये नारायण का तुल्य है। फिर समझ में आता है ओ ऐसे होगा। सो दैट्स व्हाई ईच एंड एवरी लीला it meant for relishing. That's it. So one can understand how the mind goes like this. They cannot imagine that. How is it possible? इतना क्यों हमारा जीवन में भी बहुत कुछ कार्य होता है, कभी कभी हम सोचा ही नहीं होगा, राइट। इतना अच्छी तरह से गाड़ी कभी कभी चलाता है, कभी नीचे उल्टी पलटी सब कुछ होता है, मगर व्यक्ति तो अंदर बिल्कुल ठीक है, एक स्क्रैच भी नहीं है, राइट और नॉट। समझ में आता है? So this is what we are wondering, no? On the newspaper, right? It's a wonder. What is the wonder? The Supreme Lord has done. इतना अक्ल नहीं है, समझने के लिए अक्ल नहीं है। See, क्या है, जितना हमको भगवान के ऊपर विश्वास है, हर एक विषय में, हर एक संभव में हमको भगवान को अनुभव कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, लीला। So इसलिए धाम में तो लीला तो हमेशा होता है, यहाँ भी होता है। क्यों? भगवान हर जगह पे है, जिधर जिधर भक्त है भगवान उधर ही है, राइट। So the devotees carry the Lord in them. इसलिए अभी कोई देखिए, वो शैलेश 2 बार यूएस घूम के आया, किधर किधर गया, पूरा जितना भी इस्कॉन मंदिर है जाके। What is the reason? Because it's established by a few devotees. क्योंकि हर जगह तो तीर्थ स्थान बन जाता। So this is very important. हरे कृष्णा। उलुकलम विकर्षन्तं दाम्ना बद्धं स्व आत्मजं विलोक्य दंड रहसते वदनो विमुमुच्च। ओके, वृंदावन। उल्लूखलम ओखलिस को विकर्षन्तं खींचते हुए, दामना रस्सी से, बद्धम बंधा हुआ, स्वयं आत्मजा अपने पुत्र कृष्ण को विलोक्य देखकर नंद महाराज प्रशंसन वंदना, इस अद्भुत बालक को देखकर मुस्कुराते चेहरे से विमोचन उसे बंधन से मुक्त कर दिया। अरे वो ये भगवान का दिव्य स्वरूप, ये भगवान का कमल मुख। जैसे उन्होंने हंसते हुए और मुस्कुराते हुए क्या होता है, हमारा हृदय के अंदर जितना भी कल्मश है फेंक देता है। फिर क्या हो जाता है, तुरंत हमको कौन सा पदवी में जाता है, शुद्ध सत्व में। फिर भगवान का धाम जाने के लिए लायक बन जाता है। दिस इज इट। हाउ मच इमेजिन, जो भी वृंदावन से पहला तो वो लोग रहते थे गोकुल में, राइट। गोकुलवासी है, वृंदावन ब्रजधाम, सबको इतना आनंद भगवान ने खिलाया उसको आनंद दिया हर वक्त। देखिए, आई टेल यू, व्हेन वी रीड दैट, देयर इज वन श्लोक, आई डोंट नो हाउ मच, every time when you see the Lord, you are getting a special reward. What is that? What is that? More attraction to Him. Okay. हर बार भगवान को हमको दर्शन प्राप्त होता है, उसमें से क्या लाभ होता है? Purity then. हाय कृष्ण प्रभु जी, आनंद। इतना समझ नहीं है। ओहो, हाँ, डिस्ट्रैक्ट हो गया। ओके, नहीं, भगवान को हर बार देखते हुए हमको क्या लाभ होता है? वो अर्च विग्रह हुए हो, स्वयं भगवान हो, दोनों समान है, राइट। ये तो तुल्य है। जैसे गोकुल धाम है, नहीं ये तो वृंदावन धाम है, नहीं ये तो गोलोक धाम में जो रहता है भगवान, यहाँ विराजमान है जगन्नाथ बाबा जी, राइट। इसका मतलब क्या कि उनको बार बार दर्शन करते हुए माता जी कह रही थी शुद्ध हो जाता है, राइट। अलग इससे बढ़कर और एक स्टेप आगे जाना। व्हाट इज द नेक्स्ट? हाँ, बराबर बोलो, पकड़ लिया उन्होंने। पूरा श्लोक बताओ। अब कोई प्रॉम्प्ट नहीं करने उनको हो। शुरू किसने बता रहा है?
कुंती महारानी हाँ गुड, वेरी गुड। हाँ श्लोक कैसे शुरू होता है? मैं क्लू दूं? विपत। कौन प्रॉम्प्ट कर रहा है? लगा दिया। बार बार दर्शन होते हुए क्या होता है? ये जन्म मृत्यु चक्कर से बाहर। क्योंकि हम लोग इतना प्रयत्न कर रहे हैं आनंद प्राप्त करने नहीं, मगर वहां जाके आनंद प्राप्त करना श्रेष्ठ। अच्छा, तात्पर्य बाकी है इसमें? पढ़ लिया? दोनों कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया ना। अब क्या क्या शब्दार्थ हो गया, शब्दार्थ हो गया। हाँ ठीक है, अनुवाद तात्पर्य। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जब नंद महाराज ने अपने पुत्र को रस्सी द्वारा लकड़ी की ओखली से बांधा और ओखली को घसीटते देखा तो वे मुस्कुराने लगे और उन्होंने कृष्ण को बंधन से मुक्त कर दिया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। नंद महाराज को आश्चर्य हो रहा था कि कृष्ण श्री माता यशोदा ने अपने प्यारे बेटे को इस तरह से बांधा हो। कृष्ण तो उससे प्रेम का आदान प्रदान करता है, तो फिर इतनी क्रूर कैसे बन गई कि उसे लकड़ी की ओखली से बांध दिया। इस प्रेम व्यापार को समझ कर नंद हंस पड़े और उन्होंने कृष्ण को मुक्त कर दिया। दूसरे शब्दों में, जिस तरह भगवान कृष्ण जीव को सकाम कर्मों से बांधते हैं, उसी तरह वे माता यशोदा तथा नंद महाराज को वात्सल्य प्रेम में बांधते हैं। यही उनकी लीला है। हरे कृष्ण। देखिए इसका अनुभव स्पेशल है, दो प्रकार का होता है, मैं आपको समझाता हूँ। एक तरफ देखा तो भगवान को बांध नहीं सकते, राइट, मगर भगवान को बांध लिया कौन है? यशोदा मैया, शुद्ध प्रेम से, राइट। वहां देखिए हर व्यक्ति को बांध के रखता है कौन? हर जीव को कृष्णा, सीधा इनडायरेक्ट, उनका बहिरंग शक्ति से सबको, राइट। यहाँ मैया को मौका मिला उनको बांधने के लिए, राइट। आगे देखिए उनको अभी मुक्ति करने के लिए कोई भी नहीं है, वो चलेगी, राइट, भूली गई मगर उसको उसी समय उसको ऊपर कृपा कर रहे कौन? नंद बाबा। अच्छा, भगवान को ऊपर कृपा कर सकते हैं, मगर उन्होंने वो पदवी दिया किसको? नंद बाबा, राइट। जितना भी जीव जाल है यहाँ बसे हुए, राइट, उसको मुक्ति देने वाला कौन है? भगवान। इसके लिए उसका नाम मुक्तिदाता मुकुंद। मगर वो मुक्ति किया सबको, मगर उसको मुक्ति करने के लिए कोई आना पड़ता है। ऐसे हाल है। वो हंस रहे ना, बाकी ग्वाल बाल को बोला मेरे को बांध के रखा, मुझे मुक्ति करो। यहाँ देखिए अनुभव बोलेगा तो हर चीज के अंदर, लीला के अंदर इतना तत्व है। हमारा जीवन में इसमें सीखेगा तो एक तरफ ज्ञान बढ़ता है। देखिए इसके बारे में भानुस्वामी महाराज he has given a wonderful note on that. See, in the Leela there are so many aspects. One is you get to know the philosophy. क्योंकि प्रभुपाद हमेशा क्या बताता है, इस्कॉन में जो भी भक्त है उसको सिद्धांत एकदम स्ट्रांग रहना है। क्या कारण है? What is the reason? प्रचार करें, प्रचार। उसको आगे कोई हिलाएगा तो नहीं हिलना चाहिए, नहीं तो दूसरा जगह पे गिर जाएगा। अच्छा, second thing is each and every leela gives you the direct perception of it. जैसे हरिनाम लेते हुए क्या होता है? हमारा तुरंत संबंध। Like that, even the leela also. First I said you get to know the knowledge, you gain it. That's what Maharaj is explaining. First you get the knowledge, then automatically one is getting detached. Maharaj explained so wonderfully this particular thing. क्योंकि हर एक व्यक्ति को यहाँ आया क्या कारण है? अज्ञान। वो अज्ञान को उठाने के लिए क्या करना पड़ता है? फेंकने के लिए भागवत से क्या होता है? हमको ज्ञान प्राप्त है, राइट। जैसी अज्ञान की वजह से हम लोग बंधन में था, राइट, उसको विमुक्त करने के लिए क्या होता है? प्रभुपाद बताता है एक तलवार है, वो तलवार क्या है? ज्ञान है, उससे वो रस्सी को काटना है। So that is happening when you listen to the katha. So you gain knowledge, simultaneously you are getting the, what is that? Detachment. Then what is the next level? Attachment to the Lord. So as you listen to that, you feel, oh, something very great. Oh.
goosebumps. This is, I tell you, the more you read it. Each and every shloka, each and every word, Bhagavatam has got the same potency. कल सर्वभौमा प्रभु बताया भागवत और भगवान का कुछ बिल्कुल फर्क नहीं एकदम से, बिकॉज हर एक शब्द में विशेष इतना ध्वनि है. That's why it brings all the auspicious things. Repeatedly we have to remember it. So श्लोक पढ़ने को आता ही नहीं है तो कुछ न कुछ शुरुआत में गलती होगा, मगर पढ़ना प्रयास करें. So that's why here you can understand Nanda Baba experienced a very situation, right? And he is thinking, oh, my wife has done it, and who will come under this? Hare Krishna. इसमें दो चीजें मैं वापस और ये बताना क्योंकि बीच में रोक दिया. क्या लिखते हैं? बादाना है ना, प्रहसा बादाना. हाँ, प्रहसा बादाना बोलेगा तो क्या है? हंसना, मुस्कुराना. आजकल किसी को पैसा देगा तो मुस्कुराना. सच में कारण है मन के अंदर इतना. इट्स वेरी डिफरेंट इन तमिल. नहीं पैसा देगा तो नहीं, पैसा वही कह रहा हूँ, वो फिर भी नहीं करेगा. क्या बात करते. So in our hometown we used to have a proverb, காசு கொடுத்து சிரிக்கணும். You have to pay paisa and he will laugh. That is the situation that was 50 years before. Now the situation that also changed. Even if you pay, he will not. इतना क्यों? आप इतना बात करते ना, जैसे हम पकार लेते हैं, मन में क्या होता है? ओ, इससे बढ़कर दिया होगा तो अच्छा है. होता नहीं, right? Yeah. Correct or not? It's quite natural. It's quite natural. You have to understand. See, this is what the material things will never give you the complete satisfaction unless क्या करना? भगवान को जानो. The moment you receive that, oh, this is what the Lord has given. If you think like that, then one can understand. Then santusht. Automatically one can, as Prabhupada says, simple living, high thinking. Thinking बोलेगा तो क्या है? संतुष्ट का बोलते हैं, high thinking बोलते हैं. Okay. वो तात्पर्य तो हो गया. Again, I have lost the track again. Two things I wanted to say. One is brahasat padanaha. Then the other thing is, what is that? Vimocha. That's also very important. See, I'll tell you, कोई कोई श्लोक में विशेष शब्द होता है. Prabhupada हमेशा लिखता है. These are the important things. हाँ. Louder. A small doubt, maybe you can help me to understand. When you give money to somebody, now you said that even some people are not interested, so people care to smile it out of happiness, out of gratitude. The other option possibly could be, Prabhuji, that vairagya. Is that also be a reason, or that? No, I cannot connect it now. Vairagya is something when you have no attachment towards money. That's it. Huh? So what I was talking in a general trend in office, I'm not talking of the devotee circle. So what happens when there is someone working in a company, he is getting salary. Does he satisfy with that? No. He thinks, oh, this time I could have been paid more. I sat a few more hours extra for the company. Right or not? So that means even after getting money, one will not get the laugh or the smile. Right or not? Everybody around us. Fortunately, by Prabhupada mercy and Bhaktivinoda Thakur instruction, we are able to understand what we deserve is meant for the Lord's service, not for us. So these are the things which you have to gain. Clear? So when you talk about the Vairagya is totally not attached, completely. So Prabhupada again says, no need of detachment from the money, but utilize it in the service of Krishna. This is what your question, right? Yes, to take it further, when people don't show any pleasant response to what they are credited, does it decipher, or do we understand that the person is arrogant? Or no, this is what I said. No, see, if they do not know the value of our scriptures, they will not value this, because the urge to more enjoy such a situation, even if you give everything, nothing will happen. Clear? So those who are in the
circle of the spiritual knowledge, they will understand each and every. Itna kyun? This boy is helping me in the seva, right? Immediately my mind, so there is someone to support. At the same time, I can think, oh, this is a small service. What is that in it? I could have done myself. But what my mind says, oh, he is supporting. That's a big difference, right? So in the devotee circle or those who have understood the spiritual knowledge, they can value each and everything. This is what is important. Clear? Hare Krishna. Prabhuji, even if you talk about the physical smile also, sometimes even in devotee community, we need to see that more often. They say, like it is said in our scriptures, that we should be happy to see another Vaishnava. I'll tell you one thing. In this regard, one should understand neophytes. उनसे हमको ये सोचना कठिन है, तो learning stages में, right? Even after परिपक्व आने के बाद भी कोई के अंदर होता है. This is also very important. This is very. फिर वो परिपक्व नहीं है. अभी देखिए, एक व्यक्ति 30 साल और 25 साल इस्कॉन में, उसके अंदर क्या होता है ना, परिवर्तन होना चाहिए. उसका भावना हर चीज में, हर एक के साथ व्यवहार करते हुए वो परिवर्तन होगा तो उसको क्या कहता है, इतना साल किया, ओ मैं तो इतना साल सीनियर हूं. That's why seniority counts nowhere. Senior. अरे प्रसाद का अनाउंस हो जाए तो सब स्माइल आ जाएगा. अरे अभी आ जाएगा. गोपीभिः स्तोभितो अन्रियत् भगवान् बालवत् क्वचित् उद्घायति क्वचिन् मुद्गत तद्वशो धारु यंत्रवत्. I tell you, myself and Geeta sometimes sit and read together. Sometimes when she goes for some other seva to the temple, I sit and read. But whenever read individually or singly, I never get this. As we read the shloka, when the association is that, we are able to release the words. Because certain words, Prabhupada has given it repeatedly. That's the importance. Again, even in the shloka also, Vilokya. Like that, there are so many words. Each and every word, the more you hear, the more you understand. Like these children, no, they do not know Sanskrit. As they read the word by word meaning, immediately they come to know. This is the way we also learn it. हाँ. अच्छा, अभी शब्दार्थ के लिए हाँ, अभया. गोपियों के द्वारा स्तोभितः प्रोत्साहित प्रेरित अन्नृत्य बालकृष्ण नाचता भगवान होकर के भी बालवत मानवीय बालक के ही समान उचित कभी उद्गायति जोर से गाता है, क्वचित कभी मुग्धः चकित होकर तत्वशः उनके वशीभूत होकर दारू यंत्रवत कठपुतली की तरह. अनुवाद और तात्पर्य श्री गोपाल जी के द्वारा. अनुवाद. गोपियां कहते, हे कृष्ण, यदि तुम नाचोगे तो तुम्हें आधी मिठाई मिलेगी. ऐसे शब्द तालियां बजा कर सारी गोपियां कृष्ण को तरह तरह से प्रेरित करती. ऐसे अवसरों पर वे परम शक्तिशाली भगवान होते हुए भी मुस्कुरा देते और उनकी इच्छा अनुसार नाचते, मानो वे उनके हाथ की कठपुतली हो. कभी कभी वे उनके कहने पर जोर जोर से गाते. इस तरह कृष्ण पूरी तरह से गोपियों के वश में आ गए. देखिए, बच्चों को भी ऐसे होते ना, कुछ कार्य करो, बोलेगा तो क्या बोलेगा, मुझे क्या दे, उससे नहीं पूछता. मगर यहाँ गोपियों ने भगवान के साथ इतना उसको नचाता है, मगर सबको वो नचाने वाले, वही वापस फिलॉसफी है. गोपियों को इतना विशेष पदवी दिया भगवान ने, राइट. आपको मालूम होगा, जैसे भरतनाट्यम क्लास में जाएगा तो वो टीचर क्या करता है, एक उसके हाथ में छड़ी होगा, छड़ी से ऐसे करेगा, वो आवाज सुनकर उसको पैर ऊपर नीचे होना चाहिए, राइट. अभी नचाने वाला कौन है, वो टीचर है. नाचता कौन है, वो विद्यार्थी, राइट. ऐसे ही देखेगा तो हम सबको नचाने वाला कौन है, भगवान कृष्ण. मगर यहाँ गोपियों ने क्या करते हैं, भगवान को वो भी थोड़ा थोड़ा देखे, पूरा भी नहीं देखे. That means there
मैटरनल अफेक्शन क्या है, वात्सल्य भाव बढ़ाने के लिए भगवान ऐसी, असली में वो पदवी उनको छोड़कर आने का क्या जरूरत है, नो नीड एट ऑल। उनको हमेशा क्या बोलते हैं हम लोग, आत्मा हमेशा संतुष्ट है। फिर भी क्या है, जैसे उनका शुद्ध भक्ति के साथ लीला करने में अपने आप को भी आनंद प्राप्त करते हैं, दूसरों को भी आनंद। दिस इज द स्पेशल अवतार, आई टेल यू रिपीटेडली, नो अदर अवतार you can get this out. Especially as I repeatedly say, Bhanu Maharaj says again and again, Bala Leela is the topmost. Hare Krishna. So there is no entry. Hari Bol. Okay. एक सवाल है, quick. In this shloka, there is a word stobha. किसी को श्लोक एक मिनट ये बोल रहे, कोई भी बोलो। हाँ, शोभा, हाँ पूरा बता। कौन प्राप्त किया, कोई प्राप्त किया, कौन है, उसको काटो प्रसाद है। रिमेनिंग संस्कृत में क्या बोलता है, बचा हुआ को, परफेक्ट माता जी, आज उसको बहुत कुछ खिलाओ। So I am telling you, see, when you read the shloka, you will be able to get it by the mercy of Prabhupada. अगर उन्होंने ये नहीं दिया होगा तो क्या हो जाएगा बताओ, ये शब्दार्थ नहीं दिया होगा तो क्या हो जाएगा। हाँ, ये कलेश्वर। हाँ, so हाँ, अनुभव कर सकते इतना, वही बता रहा हूँ। You cannot relish it if you don't know the word by word meaning. Right? Understand? That's why always when Prabhupada says systematic study, one should definitely go through the word by word, then to the translation. I'll tell you, when we read the word by word, you get to know what is that word. Again, when the translation comes, Prabhupada gives his own beautiful, sweet words. Then when it comes to the purport, he gets into that and give the anubhava to us. That's the reason the systematic study is very, very important. That too, when we talk about the Bhāgavata Charcha forum, I don't know how many of you have joined that. It is very clear. One should read the purport repeatedly. Hare Krishna. Viparthi kvachit agyaptah pita kon mana. कुछ भी नहीं किया, सब कुछ हो गया ना, इसमें सिर्फ ट्रांसलेशन है, अनुवाद है, सारी तात्पर्य नहीं है। ओके, पीठ कोन मान पादुकम बाहु क्षेपम च कुरुते स्वानाम च प्रीतिम आवाहन सुभाष। विभक्ति, कृष्ण खड़े हो जाते और वस्तुओं के इस तरह छूते पाने उठा नहीं पाते, क्वचित कभी आदेश दिए जाने पर पीड़क आत्मन पीठा लेखिका तथा काट कर नपन पादुकम खड़ाऊंगा बाहु क्षेपम तथा शरीर पर हाथ मारते ताल ठोकते कुरुदे करता है स्वानाम चा तथा अपने संबंधियों गोपियों तथा अन्य मित्रों का प्रीति आनंद आवाहन बुलाते हुए। अनुवाद श्री प्रभुपाद द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। कभी कभी माता यशोदा तथा उनकी गोपी सखियां कृष्ण से कहती, जरा ये वस्तु लाना, जरा ये वस्तु लाना। कभी वे उनको पीढ़ा लाना तो कभी कड़ाऊ या खाट का नापना लाने के लिए आदेश देती और कृष्ण माताओं द्वारा इस तरह आदेश दिए जाने पर उन वस्तुओं को लाने का प्रयास करते, किंतु कभी कभी वे उन वस्तुओं को इस तरह छूते पाने उठाने में असमर्थ हो और वही खड़े रहते। अपने संबंधियों का हर्ष बढ़ाने के लिए वे दोनों हाथों से ताल ठोककर दिखाते कि वे काफी बलवान हैं। देखिए, ये अनुवाद में प्रभुपाद ने पूरा अनुभव दे दिया। I'll tell you in the previous verse also, we see that in the villages, no? उसको क्या कहते हैं? I forgot that. Wait.
No, the toys with that they do all this, no? What is it? Puppet show. It takes so much time. Thank you. This puppet show. जैसे ये भगवान को ऐसे करती है, क्या प्रभुपाद क्या लिखता है? Like wooden dolls in their hands. Okay. So in this verse, something very special. Sometimes Mother Yashoda and other gopis bring that. Huh? So sometimes you would order, to bring a wooden plank, wooden shoes, everything. उसी समय पे लेदर नहीं था, इसलिए पादुका इंपॉर्टेंट. अभी भी कोई धाम में जाएगा तो कोई शुद्ध भक्त क्या कर रहा है, वो पादुका ही पहन के जाए, उसको क्या कहते हैं, पादुका, वुडन से बना. Then he will try and even he is not able to, he will be there. उसको आगे क्या गया, ऐसी ताली बजा के उसको उस्ताद. राइट. हम लोग भी करते हैं ना, बच्चों ऐसी चल के आता है ना, उसी समय उसका क्या कहते हैं, अभी प्रभु बोलते बड़ों लोग भी करना पड़ता. Hare Krishna. So moving on to that. Prabhu, what is the meaning? He would strike his body with his arms to show that he had some strength. वो आप नहीं करते हैं. I'm strong. I'll tell you, imagine. उनका बल का बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है. Hare Krishna. How old was Krishna at this stage? These are all months. Only months. Months. Yeah, it's only months. Oh. Up to the Bala Leela, it is 5 years, up to 5 years. But these instances are happening in the only months, not 1 year completed. So even when I will tell you, if you read that, after a few shlokas, next comes the Gopashtami. We read that, no, in the summary. भगवान ये गाय चराने के लायक बन गया, तभी हमको बोलते हैं गोपाष्टमी. So in this verse, no, not in this summary, we said that. So that means some more shlokas have to go. Then the Lord comes to the age of 5. But stealing in other houses and everything, this happens. Yeah, 2 years, less than 2 years. yeah, like when he is going to the fruit vendor, I think he might be at the walking stage. Yeah, so that's it. 1 year something. Yeah, that's it. Sometimes we say 15 months old, like that we say that. No? That's why I said months together. We can say like that. Okay. But in any case, these are all Bala Leela, especially it says between from starting to maybe 4 or 5 years. But especially the first 3 years or something very, very sweet. Because अभी बालक जैसी 4-5 बरस हो गया तो क्या होता है, थोड़ा सा दूर हो जाता है, होता ही नहीं है. जैसी बालक 4-5 बरस हो गया तो क्या होता है, थोड़ा दूर हो जाता है. It's not so close. Up to 3, they are very close to us, right? So there is a dependency of the child on the parents. Once they get it, as she said, when she walks, then she bindas. So this is what. Okay. Okay. अभी इसको आगे क्या सब कुछ पढ़ लिया ना प्रभु ने? हाँ? हरे कृष्णा. Translation हो गया. No, 9. We have to do 9, right? I have done 9. No, 9. 9 we have to do. No, shloka itself I not read it. Darshiyam stad vidam loka atmano britya pashyatam vrajes yoho vaha vai harsham bhagavan bala cheshtitaha. Bala cheshtitaha. Bala cheshtitam means the leelas or the pastime. So Bala Cheshtitam is important. Yes, Vidyagati, quick. Word to word, translation and purport by Divine Grace. No, you can say all that, but for purport, never miss it. The word by word, all you can say that, nothing wrong in it. But purport, one should definitely say purport by Srila. Persian exhibiting Tat Vidam, unto person who can understand Krishna's activity located throughout the whole world. Atmanana of himself. Nritya Pasyakam. How he is agreeable to carrying out the orders of his servants, his devotees. Rajasya of Rajabhumi. Uvaha executed by indeed Harsham, pleasure, Bhagavan, the supreme personality of God. Bala Cheshti. By his activities like those of child, trying to do so many things. Translation. To pure devotee throughout the world, who could understand his activities? The Supreme Personality of Godhead, Krishna, exhibited how much he can be subdued by his devotees, his servants,
In this way, he increased the pleasure of the Brajavasis by childhood activities. But that Krishna performed childhood activities to increase the pleasure of his devotees was another transcendental humor. He exhibited these activities not only to the inhabitants of Rajabhumi, but also to others who were captivated by his external potency and affluence. Both the internal devotees who were simply absorbed in love of Krishna and the external devotees who were captivated by his unlimited potency were informed of Krishna's desire to be submissive to his servant. Hare Krishna. Two aspects. See, those who are not devotees, they were completely captivated by the external energy, right? So whatever they see, oh, this is wonderful. Oh, this picture is so wonderful, right? When they go to the valley, they see, oh, this is beautiful, right? So they are able to only relish the external potency of the Lord, but they are not able to appreciate who has done this. But a pure devotee of the Lord, they are able to understand the internal potency of the Lord, which is the lots of pastimes which he does. So that means, that's what Prabhupada said, it increases the pleasure. For instance, I'll tell you. For us, attending the Bhagavatam class, attending to the Katha is giving us increasing pleasure, right? So as we start from 5-10 minutes, the interest goes up. Then into 1 hour, 2 hours, then you don't feel like eating, sitting, or sleeping. Right? No? You used to have that feeling in your Ramadan class. So why? Because the internal potency gives us immense pleasure. But for others, non-devotees, that also gives pleasure, right? Like the valley, they go tourism, what are they called? Holidays. They get the pleasure, but that is temporary because of the external energy. This one is the internal potency. This pleasure remains forever. In that, they will be drowning. Here, will be coming up. Clear? So these are the comparisons which can be given in this particular. Inhabitants of Rajabhumi, also others were captivated. So they are captivated, but they are not able to appreciate who did this in the external energy. But the internal energy, they relish each and everything because they are able to know this is the Lord. Wonderful. Moving on to sloka number 10. Phalarthi Dhanya Pratik. Synonyms: Trinihi, please come and purchase. Boho, हे पड़ोसियों, फलानी पके फलों को. इति इस प्रकार, श्रुत्वा सुनकर, सत्वरम शीघ्र, अच्युतः कृष्ण, फल अर्थी मानो उन्हें फल चाहिए, धान्यम आदाय कुछ धान लाकर, ययौ फल बेचने वाली के पास गए, सर्व फल प्रदह हर एक को सभी फल प्रदान करने वाले भगवान को अब फल चाहिए थे. अनुवाद: एक बार एक फल बेचने वाली स्त्री पुकार रही थी, हे व्रज भूमि वासियों, यदि तुम लोगों को फल खरीदने हैं तो मेरे पास आओ. यह सुनकर तुरंत ही कृष्ण ने कुछ अन्न लिया और सौदा करने पहुंच गए, मानो उन्हें कुछ फल चाहिए थे. तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय. सामान्यतया आदिवासी लोग गांवों में फल बेचने जाते हैं. यहाँ पर बताया गया है कि आदिवासी कृष्ण से कितने अनुरक्त थे. आदिवासियों पर अनुग्रह करने के लिए वे तुरंत अंजूरी में धान लेकर फल खरीदने चले आए, क्योंकि अन्यों को ऐसा करते उन्होंने देखा था. हरे कृष्णा. इसके बारे में एक विशेष श्लोक है, किसको याद आता है? हाँ, कौन सा श्लोक? विक्रेतु कामा किलकोपगण्य मुरार्तिपातार्पित चित्तवृत्तिः गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति. She was selling dahi, but she did not say dahi ले लो dahi ले लो, माधव को ले लो, because उन्होंने इतना मग्न हो गया भगवान का स्मरण में, अपना माल को बेचने को भूल ही गया. So this is one. So in this verse,
Once a woman was selling fruits, calling inhabitants, if you want to purchase the fruits, come here. Upon hearing this, Krishna immediately took some grains and went to. So this is the Leela which I was telling. So Bhagavan kya kar raha hai? Abhi baat hai uske baad, right? So Krishna wanted to buy that. उन्होंने क्या कहती है? धान्य लाओ. धान्य नहीं है. उसी समय पे धन नहीं है. क्योंकि 5,000 वर्ष के पहले धन का बात ही उठता नहीं है, क्योंकि हर चीज तो क्या होता है? बाटर सिस्टम. इसलिए प्रभुपाद हमेशा खंडन कर रहे हैं the monetary currency. He is condemning. You have read it, no? He says very clearly, this is a bakwas, this paper note. He criticizes so much. That creates all this nonsense. Correct? If it is a barter system, nobody can buy 10 flats, 15 flats, right? Yes, yes. Currency makes all the trouble. Okay. So moving on to that next shloka. Pala vikriyani tasya chuta dhanyakaram dvayam palaihi apuryat ratnaihi pala bhandam apuri cha. Okay. Wait. Okay. Anita Ramayi Mataji. Padiyama. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat pranams. Synonyms. Synonyms, everything. Mataji, read it fast. Okay, Anita, okay. Yeah. Synonyms. Phala Vikrayini, the aborigine fruit vendor who was an elderly woman. Tasya of Krishna. Chuta Dhanya, the paddy he brought to barter, having mostly fallen. Karadvayam, palms of the hands. Falaihi. Apurayat, the fruit vendor filled his small palms with fruits. Ratnaihi, in exchange for jewels and gold. Falabandham, the basket of fruit. Apuricha, filled. Translation in purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Hare Krishna. Translation. While Krishna was going to the fruit vendor very hastily, most of the grains he was holding fell. Nonetheless, the fruit vendor filled Krishna's hands with fruits, and her fruit basket was immediately filled with jewels and gold. Purport. In Bhagavad Gita 9.26, Krishna says, Patram pushvam phalam toyam yo me bhaktya prayachate tat aham bhakti upahritam. Hare Krishna, Prabhuji, can you pull down the verse? Hare Krishna? Yeah. Ashnami prayatatmanaha. Krishna is so kind that if anyone offers him a leaf, a fruit, a flower, or some water, he will immediately accept it. The only condition is that these things should be offered with bhakti. Yo me bhaktya prayachati. Otherwise, if one is puffed up with false prestige, thinking, I have so much opulence and I am giving something to Krishna, one's offering will not be accepted by Krishna. The fruit vendor, although a woman belonging to the poor aborigine class, dealt with Krishna with great affection, saying, Krishna, you have come to me to take some fruit in exchange for grains. All the grains have fallen, but still you may take whatever you like. Thus she filled Krishna's palms with whatever fruits he could carry. In exchange, Krishna filled her whole basket with jewels and gold. From this incident, one should learn that for anything offered to Krishna with love and affection, Krishna can reciprocate many millions of times over, both materially and spiritually. The basic principle involved in an exchange is an exchange of love. Therefore, Krishna teaches in Bhagavad Gita 9.27, Yat karoshi, yat ashnashi, yat juhoshi, Mataji, 1 minute. I'll give it to another devotee. Yeah, okay. Lata Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम. यत् करोषि यत् श्नासि यजुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय यत् कुरुष्व स मदर्पण. हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जितना भी होम करते हो या दान में देते हो तथा जितनी भी तपस्या करते हो, यह सब कुछ मुझे भेंट स्वरूप दो. मनुष्य को चाहिए कि अपनी आमदनी में से कुछ कुछ भगवान श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक अर्पित करे, तभी मनुष्य का जीवन सफल होगा. माताजी एक मिनट. नित्य किशोरी माताजी आगे पढ़िए. नित्य किशोरी माताजी. हरे कृष्णा. नित्य किशोरी माताजी. हरे कृष्णा. यस प्रभु जी. हाँ, आगे पढ़िए. हाँ प्रभु जी, which word to start from?
लता माता जी बताइए। माता The जी, example, भगवान श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है। okay. Prabhuji, I have in English, but if one is prepared to give something to Krishna, that is for one's own benefit. The example given in this connection is that when one's real face is decorated, the reflection of one's face is automatically decorated. Similarly, if we try to serve Krishna with all our opulence, we as part and parcel or reflections of Krishna will become happy in exchange. Krishna is always happy, for he is Atmaram, fully satisfied with his own opulence. Hare Krishna. हरे Thank कृष्णा। तो ये श्लोक Pranav. अंदर क्या है, जैसे हम लोग हर चीज भगवान को अर्पित करके ग्रहण करेगा तो दो लाभ प्राप्त होता है। एक क्या है अनूप, एक विषय तो याद रखो, हम जो भी स्वीकार करते हैं उसको भगवान को अर्पित करता है, उसमें से दो लाभ होता है। एक लाभ क्या है, एक तो उसमें से कर्मा निकल जाता है, राइट, देन जो वस्तु है वो पवित्रता हो जाता है, राइट। तीसरा ठीक है, और इसमें लिखा है ना, इट इज फॉर आवर ओन बेनिफिट में यू आर गेटिंग मल्टीपल टाइप्स। क्यों, भगवान को एक फल रखेगा तो हमको क्या होता है, एक नहीं है, कितना मिला उनको, इतना रत्न, अमूल्य रत्न, अमूल्य रत्न मिला। दैट मीन्स द लॉर्ड इज ऑलवेज रेसिप्रोकेटिंग इन मल्टीपल टाइप्स। उन्होंने आधार प्रदान करने में एकदम टॉप क्लास है। इसलिए उनको क्या कहते हैं, नाम क्या है उसका, भूल गया इतना जल्दी। आधार प्रदान करने में उससे बढ़कर और कोई नहीं है। मुक्तिदाता, सुहृद, right? So you give him one and you get multiple. But when you do Govinda Das, what does he say? Vipala Sevinu Kripana Durjana, right? उन्होंने इंक्रीमेंट देगा करके हम लोग 2 घंटा एक्स्ट्रा बैठेगा तो क्या मिलता है, कम होता है। Is it clear? So the Lord multiple times he gives, but your boss will never give it. जो मिलना है उसमें भी कम करेगा, उतना ही करेगा। So try to understand the reciprocal is the best thing is the Lord, no one else. Hare Krishna. It's time. They have to do arti also, right? Even he has to go to office. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सचमुच और अनुभव करने के लिए हमको मन है, सब कुछ है, हमको भी आगे कुछ सेवा है, रासो के में जाना है, आप लोगों को भी अपना अपना कार्य होता है। ये ग्रंथ। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी, आप कहाँ रहती है? अनीता माता जी कहाँ रहती है? आई मीन शारजा प्रभु जी। நேத்து GDY प्रोग्राम பார்த்தேன் நான் உங்களை। I came to speak to you. அப்படியா? Yeah, you were talking to couples, right? At the end, I came to speak to you actually. So then you can switch on the camera. You can get to know. Yeah. Hare Krishna. Sorry, just. हाँ, बेटी को दो, बेटी का दो। Hare Krishna. You have to do it very carefully for the Grantraj and the altar. Okay. Who will bell the ring? घंटी कौन बजाएगा? हाँ माता जी। हरे कृष्ण। நான் ஸ்டார்டிங்ல நீங்க 2020ல ஜூம் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ நான் ஜாயின் பண்ணேன். So then again வேற கிளாसेस இருந்ததால அதுல போயிட்டேன். You can contact me over phone also. Okay. ஓகே. ராஜி சுந்தராஞ்சல் பிரபுஜி, சென்னையில ராஜி சுந்தராஞ்சல் பிரபுஜி தெரியுங்களா? ஆமா மாதா, ராஜி மாதா. Okay, Sundar. அவங்க தான் எனக்கு சொன்னாங்க. Okay ma, okay. Now I got it. Okay ma. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna.
Hare Krishna. Prabhupada.